second class. And whoever has joined for the first time, my name is Ishmita, right? And we'll be covering the basic foundation course for mathematics here. We'll understand the concepts basically, and after that, we'll go back to our houses, and then we'll practice numericals, on the basis of which we'll see कि कहाँ पे difficulty वो आ रहा है, and we can discuss it later. So to recap, basically last class mein we have discussed about the contents of class 6, what are the portions or what are the chapters that are included in class 6 NCERT basically. Okay? And next is we have also learned few terms like as basic as what is number, right? So to start with, it's an arithmetical value, and a lot of other people in said a lot of other things like it's used for counting substances, it's used for calculations basically. Apart from that, we have learned few concepts, like very basic concepts like comparing numbers to understand which number is greater and which number is smaller. All of these things we have learned. Apart from that, we have also learned a very this concept called a stand in proper order. So for this, we have taken an example of our school assembly, wherein we used to stand from like smallest heighted person used to stand at the beginning, uh, and the person who had a great, like much bigger height who used to stand at the end of the line, right? So ascending order, it used to move, like we have learned about ascending order and descending orders, all of these things. If anyone can mention like what is ascending order and what is descending order, if you remember, if you could mention in the chat box, it would be great. Anyone? Yeah, smaller to greater is ascending, right, Sage? Right. And descending, anyone? All right. Right. Absolutely. Great. Okay. So apart from that, we have also came to know about this term called shifting digit, which is a number can be a number, for example, 3 to 1 can the digits can move from its own places, like it can be shifted so that we can create a new one. For example, to create 1, 2, 3, we can shift 1 to the first place, and then 2 to the second, and 3 to the last, basically. So all of these things we have already learned. We have also learned about this term called place value chart. So anyone, if you remember about place value chart or what is place value, if you remember about that, you can mention that as well. What is place value? Anyone, if you remember? Okay, I'll not. Anyone, if you want to mention it. Okay, no problem. So I'll just yeah, place value, digit value, like yeah, 1, 10, 100, right? Absolutely right, Ms. Jigyasa. Yeah, unit 10, 100. Okay, great. So to be a little to elaborate it a little bit more, I would say that place value is basically numerical values that we give to a particular digit, so that the virtue of its position can be retained, so that it can kind of retain its own position. Like a lot of people mention about 10, like unit place, 10 place, 100 place, right? Yes, right. So about this is about it. So the next, this was basically the recapitulation of the last class. So we'll start today's class with this one, with revisiting place value. Since we already know about this term, and we'll understand how to expand a particular number, which is a very basic concept for a lot of us. So first is, if we have to expand two-digit number, how to do it. And then, as we know, two-digit number has a tenth place in it as well, and ones place in it as well. So we can expand it accordingly. Like 89, as you can see an example, and then we have we can expand it like this, like 8 into 10 plus 9, then three-digit number as follows. And a four-digit number also we can expand it accordingly, because it has 1,000 place in it.
as well as 100th place and 10th place and the unit place. So we can do it accordingly. And then, so it's very basic concept. So can anyone expand it in the chat box, this term 89324? You just have to see the example and just mention it in the chat box. If you can understand, then I'll move forward to the next slide. Yes, right. Yes. Okay, great. So it's understandable, right? Great. So next slide, we can move forward. Okay. So to understand, like last day, we have also like understood like what is 10,000. So today we can go move forward with understanding what is 1 lakh. So to understand this, we have to look into first is the greatest 5-digit number, which is 99,999. So then the smallest, to make a smallest digit, like smallest 6-digit number, we just have to add 1 to it. And then again, it can be also termed as an expansion term. We can also say it as 10 into 10,000. So that would be 1 lakh basically. And okay, also last year we also discussed about two terms, that is predecessor and successor. So predecessor is something that comes before and successor is something that comes after. So +1 and predecessor is -1, right? And in this particular like concept also we learned about this one. If we consider natural number, in that case, if we say what is the predecessor of natural numbers, then of 1, then in that case there won't be any predecessor because natural number starts from 1 itself, right? So 1, if we consider natural number set, then 1 has no predecessor, but it has a successor which is 2, right? So in this particular example, we can see uh, 99,999 is the predecessor of 1 lakh, and similarly 1 lakh is the successor of it. Okay. So we can also represent it in various forms like 100 lakhs, like, and then also we can say it as 100 lakhs. Sorry. Okay. So or it's like 10 thousands. We can mention it like this, and then smallest 8-digit number. This is not it, right? Okay, this is wrong. Okay, this. Okay, so the smallest 8-digit number is also 1 crore, right? So basically, these are just representations, and next we'll move forward with the number system. So as we know, Indian number system and the international number system, there are two number systems that we can look into. So if we observe this particular sequence, like unit, 10, 100,000, so we'll see that with every progression, with every increase of this particular numbers and all, so there is an addition of 0, there is an addition, like there is a multiplication of into 10 basically. So if we remember, like or a lot of us, I think, have difficulty to remember how many zeros that comes after crore. Like till crore two, it's very basic and we remember. But then after it, we generally get confused or something happens. So if we remember the sequence properly, in that case, we will be able to remember how many zeros and like how many like count. We can count it easily. Anyone saying anything? So okay. So to understand it in a better way, 1 crore we can also term it as so 1 crore we can term it as 10 millions as well. So it's 10 to the power of 7, as I mentioned in the last class as well. There is a power value. We will see in mathematics this thing a lot, which is the
the power of some number. Like it's generally, it could be 5 to the power of 2, which is 5 into 5. Okay. So we'll see these things a lot. So these are very norm basic things. If anyone wants to add or anyone wants me to repeat anything, you can mention it. Do you want me to repeat anything or any particular term or anything that's not understandable? Okay. Assuming that everything is understood, I'll move forward. Anything? No, Shiva. 6 की power 6 होने से you're saying it would be 36. How can you explain? Okay. Shiva Singh, can you explain how it would be 36, 6 to the power of 6? Yes, Jigyasa, you're right. जी. शिवा सिंह, आई थिंक 6 की पावर 6 होने से क्या होता है ना कि 6 लाइक 6 बार 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द अमाउंट विल टर्न टू around 46,000 something. Yeah. Okay, great. So I'll move forward. I think you can just take a screenshot of this particular page, or you can just write it down as well. Is anyone writing it down, or you can just take a screenshot as well? Ma'am, power and the difference. Okay. So Shubham Verma, okay, I got it. So basically, power or exponent में there is a very big difference, but then exponent काफी बाद में आ जाता है. So I'll be coming to those things as well. But if you are asking me about power, I can tell you right now as well. जैसे कि शिवा ने और like मैम ने भी mention किया है. Okay. So this is basically the power value, like the power of a particular number. So the next, if we see, okay, so we all know a very basic instrument for mathematics we used to use in our schools are ruler. So in rulers we have seen this particular like various markings in it, and we generally know that rulers are generally centimeter rulers, and then I can show you one. Okay, so okay. So if you can see, this is a like this. There are various forms of it as well. So in it we have a lot of marking in it, and then generally the gap between one the one 0 to 1, it's 1 centimeter, and then that is how it progresses. So 1 centimeter gaps are there. So in between like every centimeter gap there are millimeters. Okay. So to understand it in a better way, there are 10 markings of millimeters. Okay. So we can term it as 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Okay. So these are very small things. So but if you have to understand that how to measure a particular length of a classroom or a school building or something like that, in that case we'll be using a higher unit, which is meter. And if we have to if we have to determine places, like distance between two places, cities and something like that, in that case we will be kind of using a much greater unit, which is kilometer. Okay. So this is about it, and then 1 meter is equals to 100 centimeters. All of these things are there. Okay. It's very self-explanatory. I anything anyone wants to add or wants anything as such?
before moving forward to the units of length, we have to we will see we'll also see it in our physics class, I believe, SI units. So can anyone does anyone remember what is SI units from our school days? Like what is SI unit? If anyone remembers, you can mention it. Yes, International Standard Unit, right? Standard units. Great. And can anyone tell me what is length? What is length? Meter. Yeah, absolutely right, Raja. Meter is an SI unit. And then, can anyone tell me what is length? Like, you can mention anything. Like, what do you mean by length? I'm just asking the meaning of it, basically. From distance between one point to another, right? Anyone else? Distance, distance between one point to another. Okay. Length denotes distance between 2 points. Right. Or a smallest. Okay, great. Yeah. So basically, it's a measurement thing. It's a measurement, or it is an extent of something from an end-to-end point. Like it from a beginning, there will be a beginning point, there will be an end point. So whichever, like if we pull a line in between them, then we can determine the length, and a lot of things can be done with it. So similarly, so there are various units of length, and before that, to understand like SI unit I mentioned, so that is International System of Units, wherein we'll see meter, which is used for this distance, length, and all of these things. Then there are kilogram, kgs are there. Then there is second for time, then Kelvin for temperature, and ampere for electricity and all. We'll see it. Okay, we'll see in physics these things, but in mathematics also these things have a greater kind of usage. So this is basically unit of length, and we all remember this chart, I believe, which is millimeter, centimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer, how it moves forward, and then how we calculate. If we remember the sequence again, maths is very interesting because if we remember any sequence, we can derive anything from anything at a basic terms. So if you have to know how many kilometers, like are how like 1 kilometer is equals to how many hectometer or decameter or meter, or as of that matter decimeter, centimeter, anything. In that case, we can understand it accordingly. Like once we progress towards millimeter, like kilometer towards millimeter, it's always multiplied by 10. And when we move backwards from millimeter towards meter, then it's always divided by. So you can see some of these examples here as well. So like in the first slide, before this slide, we have seen the scale example, right? Wherein we have seen 1 centimeter is equal to this 10 millimeters, right? And thereafter, then 10 centimeter, this one is basically 1 decimeter. This one, okay. So anyone has any question in this particular slide? Anything as such? Because these are very basic terminology, so we'll wrap it up fast. That's the reason why I'm asking. If anyone has any questions regarding this, and I'll just clarify, or else we'll move to the next slide. Okay. I think no one has any sort of doubts. Even if you have any doubts, you can mention it in the basic foundation course chat, like in Telegram as well, so that we can. No doubt. Okay, great.
So we'll see into few examples as well. Great. So since there are no doubts, we'll look into few examples so that we can remember, because mathematics is something that can be better understood and better kind of memorized, or we can understand the concepts on a better basis, on a better capacity with examples. So first is 1 kilometer, like we have seen in the last slide, 1 kilometer equals to 1,000 meters, right? So similarly, these are just for your help. And then this is the numerical. If anyone can write the answer of this, because this is very basic, and if anyone can mention the answer to this two numerical. First is population of Sundargarh is mentioned as this in the year this, and so it's said that by 2021 it will increase. Okay, great. Right. Second one, the town newspaper is published every day, and one copy has 12 pages. Okay. Um, Anyone else wants to solve? Okay, great. Great. Yeah, these are very basic. So basically, it's increasing by this much, like 72,958. So in that case, it would get just added to it, and then there are these amount of copies, and like 12 pages every copy has, so it would be multiplied. So I'll just move to the next slide. It has the solution. You can note it down as well. Yes. Okay. So it's understandable. So next slide will move. Okay. So we'll move to estimation. So estimation is a very interesting thing. It comes from our class. It's a top. Okay. Anyone else say? Okay. No problem, Jigyasa. No problem, Jigyasa. Okay. So estimation is a very basic concept. Again, it starts from our class 6, and it will move until like till the end, basically. So so for example, first, if we see, like India drew with Pakistan now for a hockey match. So approximately this amount of people were spectators in the stadium, and this 40 million were watching in television as well, right? So if we see to that, there are keywords for estimations. Estimation is basically अनुमान लगाना, I think. Yeah. So तो कुछ एक चीज का अनुमान लगाना, there is this term approximately is mentioned. So in that case, we can understand that it's just approximate value of which it is mentioned. It's not mandatory कि 51,000 लोग ही है स्टेडियम में, ठीक है? And exactly 51,000 बताया नहीं गया है, okay? And exactly 40 million भी नहीं बताया गया. So it's just an estimation value. So okay, it can be anything near to 51,000 or anything that is much bigger than like 51,000 as well. And it can't be as big as 60,000, something like that, or something that is near to 60,000. It needs to be a value which is near to 51. Okay, it can be less than it. Like for example, you can see 51,000 के near में अगर हम लोग lesser number पकड़े, so 50,800 is a much nearer number, and apart from that, 51,300, that is also a like nearer number. But in this particular case, if it would have been 51,700 or 800, in that case, we would have mentioned 52,000, approximately 52,000 लोग. So it's like the whole number का concept इसके बाद आएगा. You'll understand it in a better way. So this is about it, okay? And then okay, so estimation का concept
because all of us are quite all of us for all of us these are, I think, very basic concepts. So in that's the reason why I've mentioned advanced concept in which kind of estimations are used, which is guesstimates questions. I think few of you have came across with this particular questions. So what is guesstimates? To understand these particular questions, we see the keyword is guess. And what is guess? Can anyone tell me what is guess? What is to guess something? कुछ एक चीज guess करना क्या होता है? कोई बता सकते हैं? बता सकते हैं? एनीवन? गेस करना क्या होता है? लाइक हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, बेस्ड ऑन अ सर्टेन अवेलेबल या राइट. ओके, we estimate, right? Anyone else? Anyone else? अंदाजा लगाना, right? Right answer. Great. Very smart. Estimating on certain information. Okay. Okay. So guesstimates, absolutely. All of you are right. So estimating on certain informations, yes. And these informations can be this information can be very finite informations as well, infinite informations as well. Okay. So it doesn't need to be restricted in a particular area or particular genre. Okay. So yeah, like let X. Okay, we are guessing X's value. I believe, Shiva, you're trying to say that. Right. Yeah, right. Okay. So yes, guesstimates are basically estimation of a number with very limited information will be given, or no information could be given as well, wherein we involve a lot of like mental math, and then logical thinking also we involve in it. There are problem solving skills also we involve in it. So this particular numericals require a better like approach based questions. These are generally approach based questions, and these has the estimates has no particular like एक ऐसा नहीं होता है कि एक particular answer रहेगा ही. For example, 2 plus 2 4 होगा ही. We know that, right? But guesstimates में ऐसा नहीं होता कि इसका proper answer किसी को पता है. There is an estimation that you'll make. There is a guess that you'll give, and your approach to solve that question that will matter. Like problem solving. This is what it is: problem solving or logical thinking. आप logically think मतलब सोच के उसको किस तरीके से आप उसको concept apply करके you are moving forward with it. Okay, so these are about it. And then थोड़ा सा background knowledge will feel to like एक example देखेंगे हम लोग, तो एक background भी हम लोगों को थोड़ा सा अगर पता हो तो kind of good होगी. Okay, ma'am, letting X is guessing or assuming. Letting X is assuming actually, and guessing, we are not guessing X's value, we are just assuming it to be something. It's assuming it. To be more appropriate, ऐसे lucid language में we can say कि हाँ guess कर रहे पर actually में assume कर रहे होते हैं. We'll move to the example of it. Okay, I think this is quite clear. So for example, okay, so guesstimates में पहले तो जैसे proper एक first approximation based होता है, जैसे बता दिया गया है, एंड उसके साथ साथ ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकता है, और बहुत एक्यूरेट आंसर हम लोगों को नहीं मिलता है. देयर इज नो पर्टिकुलर लाइक प्रॉपर आंसर नहीं है इन चीज का. ओके, एंड बहुत ही इंफॉर्मेशन बेस्ड गेस होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी आर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. So a lot of people knows this particular brand iPhone, right? It's Apple brand, okay, and it has a product which is iPhone. Okay, so a number of, so if anybody asks कि एक पूरे इंडिया में कितने लोगों के पास iPhones है, so it's a very vague, like बहुत ही widespread question है, जो कि जिनका आंसर इट्स वेरी अप्रोच बेस्ड. अगेन आप ये इसके हिसाब से देख सकते हो कि कितने दुकान है आपके लोकेलिटी में, या फिर उसके हिसाब से कितने, तो इस बेसिस पे अगर जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए.
हम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे अगर एक प्रॉब्लम को ऐसे सोचेंगे कि एक हमारे एरिया में कितने एप्पल के लाइक आई इमेजिन के स्टोर्स हैं और उसके साथ साथ जी ओके, तो उसके साथ साथ एक स्टेट में कितना हो सकता है, तो उसके साथ यूटीज में एंड कैसे, मतलब इसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, इजी नहीं होगा प्रोसेस। ओके, तो इसके चलते हम लोग ऐसे अप्रोच रख सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है जस्ट लाइक एस्टिमेट क्वेश्चन, उसका इजी एक अप्रोच हम लोगों को निकालना है। तो इन दिस केस वी कैन डू दिस, वी कैन कंसिडर इट एज लाइक पॉपुलेशन ऑफ एंटायर इंडिया, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि एक लाइक ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई बच्चे के पास आईफोन नहीं होगा और सीनियर सिटीजन के पास आईफोन नहीं होगा। वैसे ही ये मैंडेटरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिच पर्सन के पास भी आईफोन होगा, दे कुड बी अट्रैक्टेड टू सम अदर ब्रांड। ओके, तो उस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे एस्टिमेट सॉल्व करने के टाइम। ओके, we'll just look into the fact that एक बेसिक सोल्यूशन, एक बेसिक अप्रोच कैसे रखा जा सकता है, which is kind of बैलेंस आउट होगा हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। okay? तो first is 1.3 billion if we consider the population. It can vary 1.38 also. In 2019 it was then, right now I think 1.40 or 41 something, it might vary, so we'll just take in between something in between. So if we consider 40% की population जो कि children और senior citizens के रहते हैं, वहां पे we can exclude these amount of people, 84 like 834 million लोग exclude हो ही गए जिन लोग यूज नहीं करेंगे। एंड उसके साथ अभी हम लोग थोड़ा अभी वो सोसाइटियल एक एस्पेक्ट एक पकड़ लेंगे जहाँ पे थोड़ा सा इजी हो सकता है कि मनी भी, क्योंकि आईफोन काफी वैल्यूएबल लाइक वैल्यू प्रोडक्ट है, लाइक बहुत ज्यादा पैसा लगता है आईफोन लेने के लिए। ओके, so in that case we will consider like upper class, middle class, and then all of these things. Okay, so in that case if we consider that 14% like जैसे कि lower middle class is around 14%, so in that case probable number एक आ जाता है around 717 million। एंड देन अभी जो मार्केट स्टैटिस्टिक्स ऑफ आईफोन है, क्योंकि तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे ऐसे न्यूज़पेपर में या फिर ऐसे अगर इंटरेस्ट रहता है किसी को ऐसे नॉर्मल नॉलेज गैदर करने में, तो हम लोग देखेंगे कि पहले ये थोड़ा सा कम था, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लॉकडाउन, मतलब ये वाले पीरियड में, ये आईफोन 12 और 13 के बाद से, तो इट्स अराउंड 4.4% अभी, तो मार्केट शेयर इतना है। तो उसके हिसाब से वी कैन से अराउंड 31 मिलियन पॉसिबल यूजर हो सकते हैं आईफोन से। तो अगेन ये कोई डिबेट तो बहुत हो सकता है ये पर्टिकुलर अप्रोच के साथ, बट देन बहुत एक लाइक इजी सा अप्रोच हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर 31 लोगों में 31 पार्टिसिपेंट्स हो आप लोग, अगर किसी के पास और कोई दूसरा अप्रोच है, you can also mention that so that we can make this class a little bit more interactive. किसी के पास दूसरा कोई अप्रोच है या फिर यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस एस्टिमेट, और किसी के पास अगर कोई एग्जांपल है टू शेयर इज देयर, कोई है ऐसे? यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन प्रोबेबली मेक यू लाइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, यू हैव समथिंग टू एक्सप्लेन। Good afternoon, Smita. I'm just following your lecture. I just want to add these type of the questions generally came into the CSAT. आप CSAT का पेपर निकाल के देखें, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आप लोग इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू इन्वॉल्व योर माइंड। हमेशा जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन का पैटर्न है वह जीवन से जुड़ के बहुत आता है, जो आपके लाइफ से अटैच्ड है। खासकर जो साइंस और मैथ्स है वो इसी से बहुत आती है। और इसको अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो शायद इसलिए पूछते हैं जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपको जीवन से जुड़ी घटनाओं को ही एड्रेस करना होगा, और ये जीवन से जुड़ी घटना है। यू ट्राई टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर। इसमें थोड़ा हिंदी अगर कोशिश करो और बोल सको, बिकॉज ए फ्यू एस्पायरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मच, हालांकि उनको जरूरत है जो अंग्रेजी सीखें। थोड़ा से बीच में हिंदी बोल दिया करो, उनको थोड़ा सा छोड़ जाएगी। You are doing a great job. Thank you, Beta. Take care. Okay. If anyone else has any question, like any particular guesstimate जो आप share करना चाहते हो, क्योंकि काफी सारे students हैं और I think a lot of people have came across with this particular concept इसके पहले भी।
क्योंकि इंजीनियर्स भी होंगे शायद काफी, तो इंजीनियर्स मतलब इंजीनियरिंग में तो प्लेसमेंट वगैरह में ये सारे आज आ ही जाते हैं क्वेश्चन। एनीवन? किसी के पास दूसरा कोई अप्रोच है जो आप बता सकते हैं? Okay, no problem. So we will move forward with the next topic. Okay. So okay, this is again ये सारे टॉपिक क्योंकि क्लास 6 के बुक से है, तो आई थॉट कि आई कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स, जो कि ऑल ऑफ द सब टॉपिक्स बेसिकली जो कि मेंशन है। तो ये थोड़ी देर पहले ही हम लोग जब एस्टिमेशन देख रहे थे वो हॉकी मैच वाला, राइट, तो वहां पे मैंने ये चीज मेंशन किया था कि जो नियरेस्ट होल नंबर होते हैं, नियरेस्ट जो होल वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे करते हैं, राइट। तो इधर एक छोटा सा ही एग्जाम्पल है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो कि है 17 और 20, राइट, इज स्मॉलर एंड इज कंपेयर्ड। हम लोग अगर दोनों के बीच में कंपेयर करें गैप, तो 17 इज मच क्लोजर टू 20 देन 10। तो हम लोग अगर इसको 17 को राउंड ऑफ करने की कोशिश करें तो इट वुड बी 20 बेसिकली, एंड सिमिलरली अगर 12 को करने की कोशिश करें तो इट वुड बी 10। सो दिस इज हाउ इट गोज। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हंड्रेड्स के, ये तो टेंस के उस पे हो गया, लाइक टेंथ के प्लेस वैल्यू पे हो गया। अगर हम लोग नियरेस्ट टू हंड्रेड्स के देखें तो उसके हिसाब से अगर 410 है तो इट्स मच क्लोजर टू 400। और अगर हम लोग 889 देख रहे हैं तो इट्स मच क्लोजर टू लाइक 900। तो ऐसे ही मूव करते हैं। इफ ओके, ये तो थोड़ा एग्जांपल्स हो गए, यू कैन सी दीज आर बिग नंबर्स। लाइक अगर इसको बोला जाए 75,847 को टेंस के हिसाब से आपको राउंड ऑफ करना है, तो इन दैट केस आपको 10 प्लेस में, लाइक 10th की प्लेस वैल्यू में जो नंबर है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर नंबर ओनली। उसको ही बस आपको वो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हंड्रेड्स का देख रहे हैं तो उसमें आपको अगेन ये पूरा 847 को कंप्लीट लेना पड़ेगा, एंड देन यू विल डू इट एज 847, क्योंकि 4750 से कम है, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1000 का सिमिलरली goes on, okay. We'll just move with the next slide because I guess this is very very simple. बहुत simple है, बहुत ज़्यादा complicated वे में हम लोग नहीं सोच रहे, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आ गया रोमन नंबर। तो जैसे कि इंडियन एक वो चार्ट हम लोगों ने देख लिया, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का वो देख लिया, और एक आ जाता है ना रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होता है? पहले किसी को अगर पता होगा, मतलब यहाँ पे बताया ही गया है ऑलरेडी, अदर देन दीज 3 पॉइंट्स, अगर किसी को कुछ और ऐड करना होगा रोमन नंबर के बारे में तो यू कैन मेंशन इट, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, एंड आई कैन ऑल्सो लर्न दैट आपके तरफ से। आप किसी को अगर रोमन नंबर पता है क्या है, और अगर इसके अलावा कुछ और पता है, लाइक ये फर्स्ट जो है कि और कुछ लाइक, ठीक है, आप लोग थोड़ा सोच लीजिए। मैं बता देती हूँ जितना मैंने बनाया है स्लाइड में। तो रोमन नंबर फर्स्ट तो आपका कंसिस्ट ऑफ नोशंस ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए। लाइक वन का रिप्रेजेंटेशन जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वन एक लाइक एक डाउन ये है, मतलब बेसिकली वन का। तो टू का हो जाता है वही टू डैश बेसिकली, देन थ्री का सिमिलरली थ्री हो जाता है, फिर फोर का थोड़ा अलग होता है वन, और ऐसे वी कर देते हैं हम, वी कर देते हैं रोमन नंबर में, ओके। सो इट्स बेसिकली नोशंस ऑफ नंबर, लाइक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे क्या होता है ना, रोमन नंबर पे आपका नंबर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड
आप कोई भी लेटर पकड़ के आप कर सकते हैं, जैसे कि लैटिन और रोमन अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी, ये आप अगर देखें तो इट इज बेसिकली आई, ये आई है और दिस इज वी, आई और वी बना देते हैं आपका 4। सिमिलरली वी आ गया आपका 5 में, ये आ गया, तो 6 के लिए आपको 5 वाला बनाना पड़ेगा और उसके आगे एक वो बिठाना पड़ता है और एक आई बिठाना पड़ता है बेसिकली। तो इसमें क्या यूज होता है, लेटर्स यूज होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एंड इसमें आपका लैटिन और रोमन अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं, विच इज ए बी सी डी, कोई भी ऐसे वैल्यू। देन सिमिलरली हाँ, तो अगर हम लोग हायर वैल्यूएशन की तरफ जाए तो हम लोग कितना ही आई लिखते रहेंगे या फिर कितना ही वी कितना लिखते रहेंगे, तो उसके लाइक आपके रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का तो आपका ये हो गया, 5 का आपका वी हो गया, तो 10 के लिए हम लोग क्रॉस या फिर एक्स आप बोल सकते हैं, 50 के लिए एल यूज करते हैं, 100 के लिए सी यूज करते हैं, एंड अगेन 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम, एंड लाइक इट मूव्स ऐसे ही। ओके, तो अगर इसको हम लोग देखें कि कैसे इसको एडिशन के टाइम पे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए ही पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पहले जो हम लोगों ने एक स्लाइड में देखा था, कॉन्सेप्ट नहीं था पर एक स्लाइड में देखे थे हम लोगों ने कि 91 को हम लोग एक्सपैंड करके उसका प्लेस वैल्यू उसको देके, 90 को अपना प्लेस वैल्यू देके और 8 को अपना प्लेस वैल्यू देके हम लोग उसको बस एक्सपैंड कर दें। ओके, एंड देन इसमें भी आप देख सकते हैं कि 90 प्लस 8 कर दिया पहले एक्सपेंशन में, फिर उसके बाद ये कर दिया 50 प्लस 10 कर दिया, फिर उसके बाद 9 ला दिया। ओके, ओके, ये मल्टीप्लाई होगा, चलिए नहीं, इट्स ओके, ओके, 50 प्लस 10 कर दिया और प्लस 9। ओके, तो ये बाहर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। Sorry, it was a different example altogether. It's not related to this sum, okay? Okay. So it's a different example altogether, but then okay, for 98 ये अगर example हम लोग पकड़ रहे हैं तो हम लोग ये वाले पे फोकस करते हैं। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। सो ये वाले पे फोकस करते हैं, इस पे हम लोग अगर एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग 100 माइनस 90 कर सकते हैं, ओके, एंड प्लस 8 कर सकते हैं। तो 8 का तो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को पता ही है, जो कि बहुत ही लाइक इनिशियल वैल्यूएशन से हम लोगों को समझ आ जाता है। एंड उसके बाद अगर हम लोग 100 का, जैसे हम लोगों ने देखा है कि 100 का सी हो जाता है और 10 का एक्स होता है, तो why x this thing is written first and c is written इसके बाद में, and उसके बाद 8 लिखा गया है, right? To understand this we have to look into some rules जो कि आएंगे इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। ओके, तो यहाँ पे क्यों लिखा गया है, बेसिकली बिकॉज इट्स लेस देन 100, तो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन कर किया जाता है आपका रोमन नंबर्स के लिए। तो फर्स्ट रूल इज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड एंड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसका वैल्यू हम लोग ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2 हो गया तो 1 प्लस 1 2, राइट? तो अगर 1 1 ऐड हो रहा है, राइट, उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी रिपीट कर दिए 1 1। ओके, बट सेकंड उस पे बताया गया है कि उसको हम लोग वी कैन नॉट रिपीट द सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार के ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, 3 टाइम्स के आगे हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिपीट दैट। और कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि कभी रिपीट नहीं होता है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप 5 को 10 बताने के लिए वी कर दिए, और अगर एल जैसे कि 50 हो गया तो 50 को वो कर दिए, एल कर दिया 100 को बताने के लिए। 100 के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी, इसीलिए उसके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली। तो सी में आपका आ जाता है कि इफ थर्ड रूल में आ जाता है, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू अ राइट ऑफ अ सिंबल टू द ग्रेटर वैल्यू, then its value is added to the value of a greater symbol। ठीक है, ये वर्ड्स में मत जाइए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए।
तो एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो कि 6 है। ओके, तो 6 में क्या हो रहा है, अगर कोई एक सिंबल का एक स्मॉलर वैल्यू हम लोग उसके राइट की तरफ ऐड कर दे, है ना, तो उसको उसको हम लोग ऐड कर देते हैं और उसका एक ग्रेटर वैल्यू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल v इज रिप्रेजेंटेड फॉर 5, v तो 5 का रिप्रेजेंटेशन है ना, और उसके राइट में हम लोग जब 1 i ऐड कर दिए जो कि 1 का रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों का ऐड करके हम लोग 6 मिल गया हम लोग को, विच इज अ हायर वैल्यू। ओके, सिमिलरली 10 के लिए भी हो गया आपका, 65 के लिए भी हो सकता है सिमिलर वे में। ठीक है, और थर्ड फोर्थ में बताया गया है, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट में लिखा गया है, जैसे कि राइट में लिखा गया तो आप ऐड कर दीजिए, लेफ्ट में लिखा गया तो आप माइनस कर दीजिए, वेरी इजी। जैसे कि 4 हो गया तो आप उसको 5 जो रिप्रेजेंटेशन है उसके आगे अगर आई ऐड किया तो वो माइनस हो जाएगा, बेसिकली 5 माइनस 1। ठीक है, और आपका लास्ट वाला जो रूल है वो है कि द सिंबल ऑफ 5 फिर L and D are never written to the left of any symbol, okay, of a greater value, and 5 L और D, these are never subtracted as well। तो ये तो रिपीट भी नहीं होता है, तो हम लोग कैसे उसको वो करेंगे, तो इसको हम लोग कभी भी रिपीट भी नहीं करते और कभी भी सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते, एंड वी कैन नॉट इवन राइट इट in the left part of it, left part of any greater value, क्योंकि it itself it holds a much greater value। अगर एक particular sequence में देखा जाए, ऑलरेडी इन लोगों के पास ऑलरेडी मच ग्रेटर वैल्यूज है, तो इसको कभी भी उस तरफ लेके जाके, लेफ्ट की तरफ लेके जाके हम लोग माइनस नहीं करते। तो दिस इज अबाउट इट। anyone wants to add anything right now? अभी रोमन नंबर जब हम लोगों ने 2 स्लाइड में देखा है, तो आप कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं? कौन सा? ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? तो रोमन नंबर बता सकते हैं कोई, लाइक इफ एनीवन वांट्स टू ऐड अदर देन दिस, अगर आपने कभी भी कोई और डेफिनेशन को देखा है कहीं पे, यू कैन मेंशन दैट, ताकि हम लोग भी सीख पाए आपसे। एनीवन? ओके, no problem। if anyone comes across anything regarding these basic concepts, तो प्लीज आप लोग बेसिक फाउंडेशन कोर्स वाले ग्रुप में लिख दीजिए या फिर कहीं पे भी, so that we can all learn new things together, right? Okay. So next chapter, फर्स्ट चैप्टर तो इतना ही था, इट्स बेसिक नंबर्स क्या है, रोमन नंबर क्या है, और इंडियन कॉन्सेप्ट्स में क्या आ जाता है, एस्टिमेशन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका होल नंबर। ठीक है, जैसे कि अभी 250 है, सर डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? Yeah, you finish it first. Finish it. Okay, sir, sure. So I was just about to say कि 250, I did not think it would take so much of time because मैंने और बाकी भी slides बनाए थे, but no, nevertheless हम लोग ये next class में cover take up करते हैं। और if anyone can mention कि थोड़ा सा मैं ma'am, is there any largest number which we can represent using Roman? Largest number which we can represent using Roman? Yeah. या इट्स रिप्रेजेंटेशन ओनली, कोई भी नंबर आप पकड़ लीजिए, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शुभ, तो ओके, नेक्स्ट होल नंबर और these concepts I'll cover it in the next class। apart from that we would do one thing, apart from that we would do one thing as well। I'll move forward with जैसे कि मुझे समझ आ रहा है कि ये टॉपिक्स काफी ज्यादा बेसिक हो जा रहा है, तो व्हाट विल डू इज आई नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं एडवांस, जैसे अभी आज वाला गेस्टिमेट मैंने रखा था जो कि एनसीईआरटी के बुक में नहीं है अभी के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आई ऑल्सो मेंशन सीसैट के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी जो कि मुझे भी बहुत कम आते हैं, बट आई मेंशन दैट एज वेल। ओके,
properties of numbers and all, I'll do in the next class. Okay. Anyone else wants to add anything जो कि या गलत कुछ मैंने बोला हो, तो you can also rectify. Anyone wants to rectify anything? If you want to add something, जी सर. देखिए क्या है, ये जो नंबर सिस्टम अगर आपको क्लियर हो गया तो जर्नी आगे की बहुत आसान होगी. द रीजन बीइंग जो सब्सट्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उससे सवाल आती है. अगर आप लोग थोड़ा सीसैट का पेपर निकाल के देखें, आप पाएंगे 7-8 टॉपिक से सवाल जनरली आते हैं. वो सारे जो 7-8 टॉपिक हैं वो नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है. एक बार अगर नंबर सिस्टम आप समझ गया कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, वो करना आसान होगा. जो हम लोगों ने बेसिक फाउंडेशन कोर्स की पूरी एक्सरसाइज शुरू की है, उसके पीछे लक्ष्य यही है कि आपको बहुत बेसिक स्क्रैच से शुरू किया जाए. ये मान के चल रहे हैं कि आपका क्लास 6 में आज ही एडमिशन हुआ है, तो अगर आपको आता है तब भी आप इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, आप इसको सुनिए. इवन स्मिता मैथ्स की जो एक्सपर्ट है, इन्होंने बोला कि सर जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया मुझे खुद कई चीजें नहीं पता लगी, जो कि जब हमने पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से देखा. तो आप लोग अटेंटिव होने की कोशिश करिए, आप लोग पूछने की कोशिश करिए, और अल्टीमेटली सी सेट आप क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय कम होता है और परफॉर्मेंस ज्यादा करनी होती है. तो इसीलिए आप लोग जब भी क्लास खत्म हो, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए. मेरे ख्याल से इस तरह ने काफी कोशिश की है. कोई सवाल जवाब आप लोग जरूर करिए. थैंक यू. Okay. Anyone wants to add anything? अगर लास्ट के 5 मिनट हम लोग किसी को अगर अपने तरफ से कुछ नॉलेज पता होगा तो मेंशन है. बाकी I'll say I'm really sorry about it. Jaiसे sir wants all of us to be bilingual and to speak so that all of us understand, सबको समझ में आए. तो इसीलिए I'm trying my best, and if अगर कोई भी गलती हो रहा है तो I'll rectify soon. तो जिनको जिनको थोड़ा इंग्लिश कम आती है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इंग्लिश सीखने की कोशिश करें. इंग्लिश सीखना मैंडेटरी है अगर आपको आईएएस बनना है. अगर आप नहीं सीख पाओगे तो नहीं हो पाओगे. तो जिनको भी इंग्लिश में समस्या है उनसे मेरी ये बार बार मैं सलाह देता हूँ, आप सीखने की कोशिश करो.